हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। श्रीसीतानाथसमारम्भं श्रीरामानन्दार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीशुकौवाच निशम्य कौसा रविणोपवर्णितं हरे कथं कारणशूकरात्मन पुनः स पप्रच्छ तमुद्यताञ्जलि न चाति तृप्तो विदुरधृतव्रतः। विदुरोवाच तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्य हिरण्यक्ष हत इत्यनुसुषुम तस्य चोद्धरतः क्षोणीं स्वदंष्ट्राग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्माद्धेतोरभुन्मृध। मैत्रेय उवाच साधुवीर त्वया पृष्टमवतार कथं हरे यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानं मृत्युपाशविशातनिं जयातानपदः पुत्र मुनिना गीतयार्भक मृत्युकृत्वैव मूर्ध्यग्रि मारुरुहो हरे पदम्। अथात्रापीतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवानामनुपृच्छतं दितिर्दक्षायणी क्षत्तर्मारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामाचकमे सन्ध्यायां हृदयार्दिता इष्ट्वाग्निजिह्वां पयसा पुरुषं यजुषं पतिं निम्लोच्चत्यर्क आसीन मग्न्यागारे समाहितं दितिरुवाच एष मन्त्वत्कृते विद्वन् काम आतसरासन दुनोति दीनं विक्रम्य रम्भामीव मतङ्गज तद्भवन् दैहमानायं सपत्नीनं समृद्धिवि प्रजापतीनं भद्रं ते मया युङ्क्तामनुग्रहं भर्तर्जाप्तोरुमानानं लोकानाविशतेजस पतिर्भवद्विधो जासं प्रजया ननुजायते पुरा पिता नो भगवान् दक्ष दुहितृवत्सल कं वृणीत परं वत्सा इत्यपृच्छतन पृथक् स विदित्वात्मजानं नो भावं सन्तानभावन त्रयोदशा ददात्तासं जास्ते शीलमनुव्रता अथ मे कुरु कल्याण कामं कञ्जविलोचन आर्तोपसर्पणं भूमन् अमोघं हि महीयसि इति तं वीरमारीच कृपणं बहुभाषिणं प्रत्याहानुनयन् वाचा प्रवृद्धानङ्गकस्मलम् एष तेऽहं विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि तस्याः कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्तैर्वर्गिकीयत सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् व्यसर्णावमत्येति जलजानैर्यथार्णवं जामाहोरात्मनो ह्यर्धं श्रेयस्कामस्य मानिनि यस्यां सोऽधुरमस्यस्य मध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरा जामाश्रित्येन्द्रियाग्रातिन् दुर्जया नितराश्रमैः वयं जयेम हेलाभिर्दस्युन् दुर्गापतिर्यथा न वयं प्रभवस्तं त्वा मनुकर्तुं गृहेश्वरी अप्यूयुषा वाकार्ष्ण्येन ये चन्ये गृणगृध्नवः अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलं यथा मां नातिवोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्य भूतानि भूतेशानुचराणि ह एतस्याहं साध्विसन्ध्यायां भगवान् भूतभावन परितभूतपरसद्भिर्वृषेणाटतिभूतराट् श्मशानचक्रानिलधूलिधूम्र विकीर्णविद्योतजटाकलापः भस्मावकुण्ठा मलरुक्मदेहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते नजस्य लोके स्वजनपरो वा नात्यद्रुतो नोत कश्चिद्विगर्ह्य
वयं प्रत्यैजच्चरणापविद्धा मासस्महेजं बत भोक्तभोगम् जस्यानवद्या चरितं मनीषिण गृह्णन्त विद्यापटलं विभित्सव निरस्तसम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरद्गते सतं हसन्ति यस्या चरितं हि दुर्भगाः स्वात्मान्व्रतस्या विदुषः समीहितं जैर्वत्समाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितं ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला यत्कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या ओहो विमुम्नश्चरितं विडम्बनं मैत्रेय उवाच शैवं संवेदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्राहो वास ब्रह्मर्षे वृषाळीव गतत्रपा स विदित्वाथ भर्ज्याया स्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि तत्त्वयाथोपविवेशः अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणनायम्यवाग्यत ध्यायन् जप जजाप वीरजं ब्रह्मयोतिः सनातनं दितिस्तु व्रीडिता तेन कर्माबद्धेन भारत उपसंयम्य विप्रर्षि मधो मुख्यभ्यभासत दितिरुवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभो वधीत् रुद्रः पतिर्हि भूतानं जस्याकर वमं हसं नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुषे शिवाय न्यस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्यवे स न प्रसीदतं भामो भगवानुर्वनुग्रह व्याधस्याप्यनुकम्प्यानं स्त्रीणं देव सतीपति मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्यासि संलोक्या मासासानं प्रवेपतिं निवृत संध्या नियमो भर्ज्यामाह प्रजापतिः कश्यपोवाच अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान्मोहर्तिका दुत मन्निदेशातिचारेण देवानं चातिहेवनात् भविष्यस्तवा भद्राव भद्रे जाठराधमौ लोकान् सपालं स्त्रींश्चण्डी मुहुराक्रन्दयिष्यत प्राणिनं हन्यमानानं दीनानामकृतागसं स्त्रीणां निगृह्यमाणानं कोऽपि तेषु महात्मसु तदा विश्वेश्वर क्रुद्ध भगवल्लोकभावन अनिश्यत्यावतिर्ज्यासौ यथाद्रिन् शतपर्वधृक् दितिरुवाच बधं भगवता साक्षात् सूनाभोदारबाहुना आसस्ते पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धात् ब्राह्मणाद् विभो न ब्रह्मदण्डदग्धस्य न भूतभयदस्य च नारकाश्चानुगृह्णन्ति जं जं जोनिमसौ गता कश्यपोवाच कृतशोकानुतापेन सद्य प्रत्यपमर्शनात् भगवत्योरुमानच्च भवे मय्यपि चादरात् पुत्रस्यैव तु पुत्राणं भवितैकशतं मत गास्यन्ति जज्जसा शुद्धं भगवज्जससा समं जोगैर्हेमेव तुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधव निर्वैरादिभिरात्मानं जच्छीलमनुवर्तितुं यत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति जदात्मकं स स्वदृग्भगवान् यस्य त्वस्य तेनन्ययादृशा स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतं महिष्ठ प्रवृद्धभक्त्यायनुभाविताशये निवेश्य वैकुण्ठमिमं विहास्यति अलम्पटशीलधरो गुणाकरो पृष्ठपरध्याव्यथितो दुःखितेषु अभूतशत्रुर्जगत शोकहर्ता नैदाघिकं तापमिवोडुराजः अन्तर्बहिश्चामलभब्जनेत्रं स्वपुरुषेच्छानुगृहीतरूपं पौत्रस्तव श्रीललनाललामं द्रष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननं मैत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्र ममोदतादितिर्भृशं पुत्रयश्चोवधं कृष्णाद् विदित्वा सिन्महामना इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे दितिकश्यपसंवादे चतुर्दशोऽध्यायः अथ पञ्चदशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच चतुर्दशोऽध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु पञ्चदशोऽध्याय मैत्रेय उवाच प्राजापत्यं तु तत्तेज परतेजो हनं दिति दधार वर्षाणि शतं शङ्कमानासुरार्दनात् लोके तेन हता लोके लोकपाला हतौजस न्यवेदयन् विश्वसृजे ध्वन्तव्यतिकरं दिशं देवा ऊचुः
तम एतद्विभो वेत्थ संविघ्नाजद्वयं भृशं न ह्यव्यक्तं भगवत कालेन स्पष्टवर्त्मना देवदेव जगद्धातर्लोकनाथ शिखामणे परेशां त्वं भूतानामसि भाववेत् नमो विज्ञानविद्याय मायायेतमुपेयुषे गृहीतगुणभेदाय नमस्ते व्यक्तयोनये ये त्वानन्येन भावेन भावयन्तात्मभावनम् आत्मनि प्रोतभुवनं परसदसदात्मकं तेषां सुपक्वयोगानं जितश्वासेन्द्रियत्मनं लब्धयुष्मत्प्रसादानं न कुतश्चित् पराभव यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्त्यैव जन्त्रिताः हरन्ति बलिमायत्ता तस्मै मुख्यायते नमः सत्वं विधत्स्वं सम्भूमं स्तमसानुत्तकर्मणम् अदभ्रदयया दृष्ट्या आपन्ना नरः शिक्षितम् एष देवादितिर्गर्भ ओज कस्यपमर्दिमितं दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धतेऽग्निरिवैधसि मैत्रेय उवाच सप्रहस्य महाबाहो भगवान् शब्दगोचरः प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान् प्राणन् रुचिरया गिरा ब्रह्मोवाच मानसा मे सुताजुष्म पूर्वजाः सनकादयः चेरुर्विहाय सा लोका लोकेषु विगतस्पृहा त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मना जजुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतं वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिं यत्र चाद्य पुमानस्ते भगवान् शब्दगोचर सत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानं नो मृडयन् वृषः यत्र निःश्रेयसं नाम वनं कामदुघैर्द्रुमै सर्वतोर्श्रीभिर्विभ्राजत् कैवल्यविमूर्तिमत् वैमानिका सललनश्चरितानि यत्र गायन्ति लोकसमलक्षपणानि भर्तु अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनं गन्धेन खण्डधियोऽप्योनिलं क्षिपन्तः पारावतान्यभृतसार च सचक्रवाक दात्यूहंस सुकतित्तिरिबर्हिणां य कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर्भृङ्गाधिपे हरिकथामिव गायमाने मन्दारकुन्दकुरवोत्पलचम्पकर्ण पुन्नागनागबकुलम्बुजपारिजातः गन्धर्चिते तुलसिका भरणेन तस्या जस्मिंस्तप सुमनसो बहुमानयन्ति यत्सङ्कुलं हरिपदानतिमात्रदृष्ट्यै वैदुर्यमार कतहे मम येर्विमानै येषां बृहत्कटितटा स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मना नरज दधुरुस्मयाद्यै श्रीरूपिणी कुणयति चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसद्मनिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहिम्नि सम्मार्जति वजदनुग्रहणे न्ययत्न वापि सुविद्रुम तटा स्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजबले तुलसीभिरीशम् अभ्यर्चति स्वलकमुन्न समीक्ष्य वक्र मुच्छेसितं भगवते त्यमतङ्गजच्छ्रीः जन्नप्रजन्त्यघविदो रचनानुवादा शृण्वन्ति जन्यविषया कुकथामतिघ्निः जास्तु श्रुता हतभगैर्नुभिरात्तसारा स्तां क्षिपन्त्य शरणेषु तमःषु हन्त जेभ्यर्थितामपि न च मृगातिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्म यत्र नाराधनं भगवतो विरतन्त्यमूष्य सम्मोहिता विततया बत माययाते जच्च व्रजन्त्यनिमिषा मृषभानुभृत्या दूरे जमाह्युपरि न स्पृहणीयशीला भर्तुर्मिथ सुजसस कथनानुराग वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गा तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्र विबुधाग्र्य विमानशोचि आपूपरं मुदमपूर्वमुपेत्य जोग मायाबलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठं तस्मिन्नतीत्यमुनय षडसज्जमाना कक्षा समान वयसाथ पथ समात्यां
बत सप्तमायां देवाच देवावचक्षत गृहीत गदौ परार्घ्य केयूरकुण्डलकिरीटपिटङ्कवेशौ मत्तेद्विरे पवनमालिकया निभीतौ विन्यस्तया सितचतुष्टयबाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवा कुटिलया स्फटनिर्गमाभ्यां रक्तिक्षणेन चमनाग्रभसं दधानौ द्वार्जे तयोर्निर्विशोमिर्शततोरपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरट वज्रकपाटिकाजा सर्वत्र ते विषमया मुनय सुदृष्ट्या जे सञ्चरन्त्यवहिता विहिता विगताभिशङ्का तान् वीक्ष्य वातरसनंश्चतुरकुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् व्यत्रेण चास्खलयता मतदर्हणां स्तौ तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ ताभ्यां निषत् स्वनिमिषेषु निषेध्यमानः स्वरहत्तमा ह्यपि हरे प्रतिहारपाप्याभ्याम् ऊचु सुहृत्तमदिदृङ्गित द्रुक्षितभङ्गैषत् कामानुजेन सहसा त उपप्लुताक्ष्याः मुनयौचु को वामिहेत्य भगवत् परिचर्ययोच्चेत् स्तद्धर्मिणां निवसतां विषमस्वभाव तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गत विग्रहेवं को वात्मवत् कुहकयो परिसङ्कनीय न ह्यन्तरं भवति ह समस्तकुख्या वात्मानमात्मनि नभो नवशिवधीराः पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिङ्गिनो किं व्युत्पादितं ह्युदरवेदि भयं यतस्य तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठभर्तृः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधिभ्यं लोकानितो व्रजतमन्तरभावदृष्ट्या पापीयशस्त्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र तेषामितीरितमुभा बवधार्य घोरं तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपूगे सद्यो हरे रनुचरा गुरुबिभ्यतस्तत् पादग्रहावपतता मतिकारणे कातरेण भूयादघोनि भवभद्विरकारिदण्डो यनौ हरेत सुरहेलनमप्यशेषं मा वोऽनुतापकलया भगवत्स्मृतिघ्नो मोहो भवेदिह तु नौ व्रजतोरधोधः एवं तद्दैवद्भगवान् नरविन्दनाभ स्वानं विबुध्य सदतिक्रममार्ज्यहृद्यः तस्मिन् जजौ परमहंस समहान्मुनिना मन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्री तं त्वागतं प्रतिहृतौ पैकं स्वपुंभि स्ते चक्षताक्ष विषयं स्वसमाधिभाग्यं हंसश्रियोर्व्यजनयो शिववायुल्लोला शुभ्रातपत्र शशिकेशरशीकराम्बुजं कृत्स्नप्रसादसुमुखं स्पृहणीयधाम स्नेहावलोकलया हृदि संस्पृशन्तं श्यामे पृथा पुरशिशोभितया श्रियास्व चूडामणिं सुभगयन्तमिवात्मधिष्ण्यं पीतांशुके पृथुनितं विस्फुरन्त्या कञ्चालिभिर्विरुतया वनमालया च बल्गुप्रकोष्ठवलयं विनतासुतांस्ते विन्यस्तहस्तमितरेण धुनाममब्जं विद्युत्क्षिपन्मकरकुण्डलमण्डनार्ह गण्डस्थलोलन् मुसमुखं मणिमत्किरीटं दुर्दण्ड षण्डविवरे हरतापरार्ध्य हारेण कन्धरगतेन च कौस्तुभेन अत्रोपस्पृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिरायाः स्वानं धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यं मह्यं भवस्य भवतं च भजन्तमङ्गं ते मुर्निरीक्ष्य न वितृप्तदृशो मुदाकै तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जलकमिश्रतुलसी मकरन्दवायुः अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि विचित्ततन्वा ते वा अमुष्य वदनासितपद्मकोश मुद्वीक्ष्य सुन्दरतराधरकुन्दहासं
लब्धासि स पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्घ्रि द्वन्द्वं न कारुणमणि श्रयणं निदध्यो पुंसां गतिं मृगयतामिह जोगमार्गै ध्यानस्पदं बहुमतं नयनाभिरामं पौष्णं वपुर्दर्शयान्नमन्यसिद्धै प्रोत्पत्तिकै समगृणञ्जुतमष्टभोगैः। कुमारावचुः ज्वन्तर्हित हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं स्वदैव्यनो नयनमूलमनन्तराद्ध जरिहेव कर्णविवरेण गुहां गतो न पित्रानुवर्णितरः भवदुद्भवेन त्वं त्वं विदाम भगवान् परमात्मतत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रतिरतिं रचयन्तमेषां यत्तेनुतापविदितैर्दृढभक्तियोगैः हृद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागाः नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किन्त्वन्यदर्पितभयं ध्रुव उन्नयेस्ते जेङ्गत्वदङ्घ्रिशरणा भवतः कथाया कीर्तन्यतीर्थजशसा कुशलारसज्ञः कामं भव स्ववृजिनै निरयेषु नास्ता चेतोलिबद्यदिनुते पदयोरमेत वाचश्च नस्तुलसीवत् यदि तेङ्घ्रिशोभा उर्जेत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः प्रादुश्चकर्थजदिदं पुरुहूतरूपं तेने सनिवृत्तिमवापुरलं दृशो न तस्मा इदं भगवते नम इद्विधेम जोनात्मनं दुरुदयो भगवान् प्रतीत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे जय विजयो सनकादिशापनाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ षोडशाध्यायः। ब्रह्मोवाच इति तद्गुणतं तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठनिलयो विभो। श्रीभगवानुवाच एतौ पार्षद्यौ मह्यं जयो विजय एव च कदर्थीकृत्यमं यद्वो बहुक्रातामतिक्रमं जस्त्वेतयद्धृतो दण्डो भवद्भिर्मामनुव्रतैः स एवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहेलनात् तद्वप्रसादयाम्यद्य ब्रह्मदैवं परं हि मे तद्धित्यात्मकृतं मन्ये जत्स्वपुंभिरसत्कृताः जन्नामानि च गृह्णानि लोकभृत्ये कृताकसि जो साधुवादस्तत्कीर्तिं हन्ति त्वचमिवावमय जस्यामृतामलयस श्रवणावगाः सद्य पुनाति जगदस्वपचाद्विकुण्ठ सोऽहं भवद्भ्य उपलब्धसुतार्थकीर्ति छिन्द्यं स्वबाहुमपि प्रतिकूलवृत्तिं यत्सेवया चरणपद्मविपत्र सद्यक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं न श्रीर्विरक्तिमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्ष्यालवार्थ इतरे नियमन् वहन्ति नाहं तथाग्नि जजमानः बिर्बिताने स्योतद्घृतप्लुतमदन् हरिभुङ्मुखेन जद्ब्राह्मणस्य मुखतश्च रतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाकैः येषां बिभर्म्यहमखण्डविकुण्ठजोगा मायाविभूतिरमलाङ्घ्रिरज किरीटै विप्रांस्तुको न विसहेत यदार्हणाम्भ सद्य पुनाति सहचन्द्रललामलोकान् जेमे तत्तनुदिजवरान् दुहतिर्मदीया भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्ध्या द्रक्ष्यन्तघक्षतदृशो ह्यनिमन्यवस्तान् गृध्रारुषा मम कुसन्त्यधिदण्डनेतुः जो ब्राह्मणान् वै धिया क्षिपतोऽर्चयन्ता स्तुष्यद्रुतस्मितसुधो क्षितपद्मवक्राः वन्यानुरागकलयात्मजवद्गृणन्त सम्बोधयन्त्यहमिवाहमुपाहृतस्ते जन्मे स्वभर्तुरवसाय मलक्ष्यमाणो जुष्मद्व्यतिक्रमं प्रतिपद्य सद्य भूयो ममान्तिकमितं तदनुग्रहो मे जत्कल्पतामचिरतो वृत्तयोर्विभास। ब्रह्मोवाच अथ तस्य सतीं देवी मृषिकुल्यं सरस्वतीं न स्वद्यमनुदष्टानं तेषामात्माप्यतृप्यत
सतिं व्यदाय शृण्वन्त लग्भिं गुरुवार्थगौहरं विगाह्यागाधं विराम गाधगम्भीरं न विदुस्तचिकीर्षतं तेजोगमाययारब्ध पारमेष्ठ्यमहोदयं रजो प्राञ्जलयो विप्रा प्रहृष्टाख्युभितत्वच ऋषयौ च नवयं भगवान् विद्म स्तवदेव चिकीर्षितं कृतो मेऽनुग्रहश्चेति यदध्यक्ष प्रभाससे ब्रह्मणस्य परं दैवं ब्रह्मणा किल ते प्रभो विप्राणं देवदेवानं भगवानात्मदैवतं त्वतः सनातनो धर्म रक्षते तनुभिस्तव धर्मस्य परमो गुह्य निर्विकार भवन्मत तरन्ति ह्यञ्जसा मृत्युं निवृता यदनुग्रहात् योगिनः स भवान् किंचित् दनुगृह्येत यत्परे जम्बै विभूतिरूपजात्यनुबेलमन्ये रथार्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणु धन्यार्पिताङ्घ्रि तुलसी नवदाम धाम्नो लोकं मधुव्रत पतेरिव कामयाना जस्तं विविक्तचरितैरनुवर्तमानं नात्याद्रियात् परमभागवत प्रसङ्ग सत्त्वं द्विजानुपथ पुण्यरजपुनीता श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वं धर्मस्य ते भगवतस्त्रिजुगत्रिभिस्वै पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थं नूनं भूतं तदभिघातरजस्तमश्च सत्त्वेन वरदया तनुवा निरस्य नत्वं द्विजोत्तमकुलं यदिह्यात्मगोपं गोप्तावृषा स्वरहणेन ससूनृतेन तर्ह्येव नर्घ्यन्ति शिवस्तवदेव पन्था लोकग्रहस्य दृषभस्य हि तत्प्रमाणं तत्तेनभीष्टमिव सत्त्वनिवेर्विधो विधित्स क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धृतारो नैतावतात्यधिपतेर्बत विश्वभर्तु स्तेजक्षत त्ववन तस्य सते विनोदः जम्बानयो अर्धमधीश भवान् विधत्ते वृत्तिं नु वा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासु वाज उचितो ध्रियतां सदण्डो जेनागसोपयम जुङ्क्ष्मणि किल्बिषेण श्रीभगवानुवाच एतौ सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सद्य संरम्भ संभृत समध्यनुबद्धयोगौ भूय सकाशमुपजास्यत आसुजोभ शापो मयेव निमित्तस्तदवैत विप्रः ब्रह्मोवाच अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानन्दभाजनं वैकुण्ठा तदधिष्ठानं विकुण्ठं च स्वयं प्रभं भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमन्य च प्रतिजग्मु प्रमुदिता संसन्तो वैष्णवीं श्रियं भगवानुगवाह जातं मम्भैष्टमस्तु सं ब्रह्मतेजा समर्थोऽपि हन्तुं नेच्छे मतं तुमे एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिताद्वारि विसन्ति मयुपारते मयि संरम्भजोगेन निस्तिर्य रम्येलनं प्रत्येष्यतं निकासं मे कालेनाल्पीयसा पुनः ध्वस्थाबादिस्य भगवान् विमानश्रेणिभूषणं सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्वं धिष्ण्यमाविशत् तौ तु गिर्बाणऋषभौ दुरस्ताद्धरितो कथा हतश्रियौ ब्रह्मशापदभूतं विगतस्मयौ तदा विकुण्ठधीशाणात् तयोर्निपतमानयो हाहाकारो महानासीत् विमानग्रे सुपुत्रका तावेव ह्यधुना प्राप्तौ पार्षदप्रवरौ हरे दीतेर्जठरनिर्विष्टं काश्यपं तेज उल्बणं तयोरसूरयोरद्य तेजसा जमयोर्भिव आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवांस्तद्विधित्सति विश्वस्य च स्थितिलयोद्भव हेतुरद्य योगेश्वरैरपि दुरत्ययजोगमायः क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्यधीश तत्रास्मदीय विमृशेन क्रियानिहार्थः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 16 श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ 17 मैत्रेय उवाच
निशम्यात्मा भुवागे तं कारणं शङ्कयोज्झिता ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकस दितिस्तु भर्तुरादेश दपत्य परिसंकिनी पूर्णे वर्षशते सद्वे पुत्रौ प्रसुसुवे जमौ उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः दिवि भुवन्तरिक्षे च लोकस्य रुभयावहा सहाचला भुवश्चेलुर्दिश सर्वा प्रज्ज्वलु स्वल्काश्चासनयपेतु केतवश्चार्तिहेतव बभो वायु सुदुस्पर्श फुत्कारा निरयन्मुः उन्मूलयन्नगपतिन् बात्यानीकरजध्वज उद्धसत्तडिदम्भो दघटया नष्टभागणे व्योम्नि प्रविष्टतमसा न स्म व्यादृश्यते पदं चुक्रोश विमनाबाधिर्रुदुर्मेख्युभितोदर सोदपानाश्च सरित शुक्षुभु शुष्कपङ्कजा मुहुः परिधयो भुवन् सराहो शशिसूर्जयः निर्घातारथ निर्हादा बीवरेभ्यः प्रजज्ञिरे अन्तग्रामेषु मुखतो वमन्त्यवह्निमुल्बणं शृगालोलुकटाङ्कारे प्राणे दूरशिवं शिवा सङ्गीत भद्रोदन वदुन्नमय्य शिरोधरं व्यमुञ्चन् विविधावाच ग्रामसिंहास्ततः खराश्च कर्कशैक्षत्त हुरैर्घ्रन्तो धरातलं खार्काररभसा मत्ताः पर्यधावन् वरुथस रुदन्तो रासभद्रस्ता नीडादूतपतन् खगा घोषेरन्ये च पशव सकृन्मूत्रमकुर्वत गावो त्रसन्न सृग्दोहा स्तयोदापुयवर्षिण व्यरुदन् देवलिङ्गानि द्रुमापेतुर्विनानिलं गृहान् पुण्यतमानन्ये भगणांश्चापि दीपिता अतेरेरुर्वक्रगत्या जुजुधुश्च परस्परं दृष्ट्वा न्यंश्च महोत्पाता न तत्त्वविदप्रजा ब्रह्मपुत्रानुनृते भीता मेनिरे विश्वसंप्लवं तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषौ बभ्रुधाते स्मसारेण कायेनाद्रिपति भव दिवि स्पृशौ हेमकिरीटकोटिभिः निरुद्धकाष्ठौ स्फुरतङ्गदाभुजौ गां कम्पयन्तौ चरणै पदे पदे कट्या सुकाञ्च्यार्कमतीत्यतत्सतु प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीत् जप्राक् स्वदेहात् जमयोरजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा जं तं हिरण्यक्षमसूत सग्रतः चक्रे हिरण्यकशिपुर्दोर्भ्यं ब्रह्मवरेण च वसे सपालं लोकं स्त्री न कुतो मृत्युरुद्धत हिरण्यक्षनुजस्तस्य प्रियप्रीतिर्कृतान्वहं कदा पाणिर्दिवं जातो जत्सुस्तु मृगयन् रणं तं वीक्ष्य दुस्सहजवं वर्णत्कञ्चननूपुरं वैजयन्त्यास्रजाजुष्टमसन्न्यस्तमदागहं गतं मनोवीर्यवरोत्सिक्ता मसृण्यमकुतोद्भयं भीता निलील्यरे देवास्तार्क्ष्यत्रस्ता इवाहय स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट् सेन्द्रान् देवगणान्निक्षिवा न पश्यन् व्यददद्भृशं ततो निवृत्तक्रीडिष्यन् गम्भीरं भीमनिस्वहं बीजगाहे महासत्त्व बाधिं मत्त इव द्विप तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका जादोगणासन्नधिया ससाध्वसा अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दुरतरं प्रदुद्दुवः सवर्षपूगानुदधौ महाबल श्चरन्महोर्मिञ्च सनेरितान् मुहुर्मौर्व्याभिजग्ने गदया विभावरी मासेवितंस्तात पुरीं प्रचेतस तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं जदोगणानां वृषभं प्रचेतसं स्मयन् प्रणब्धुं प्रणिपत्य नीचव जग्गादमे दैहधिराज संयुगं त्वं लोकपालाधिपतिर्दुहच्छ्रवा
विज्ञापहो दुर्मद वीरमानिनं विजित्य लोकेऽखिल दैत्यदानवन् जद्राजसूयेन पुरा यजत्प्रभो स एव मुत्सिक्तमदेन विद्विषा दृढं प्रलब्धो भगवान् पाम्पति रोषं समुत्थं समयं स्वया धिया व्यवोचतङ्गोपशमं गता वयं पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनं जसंयुगे त्वा रणमार्गकोविदम् आराधयिष्यतु सुरर्षभेहितं मनस्विनं जं गृणते भवादृशा तं वीरमाराधभिपद्य विस्मय स ईष्यसे वीरशये स्वविवृता जस्त्वद्विधानाम शतं प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्यक्षदिग्विजये सप्तदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ अष्टादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच तदेव माकर्ण्यजले सभासितं महामनास्तद्विगणस्य दुर्मदा हरेर्विदित्वा गतिमङ्गनारदात् रसातलं निविर्विशे त्वरान्वितः ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रनीयमानावनिमग्रदंष्ट्रया मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचो ऋणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगा आहेन मेह्यङ्गमहिं विमुञ्चनो रसौकसं विश्वसृजे यमर्पिता न स्वस्ति जास्य शनयाममेक्षत सुराधमासादिदितशूकराकृते त्वं न सपत्नेरभवाय किमृतो जो मायया हन्त्युसुरान् परोक्ष्यजित् त्वां जोगमाया बलमल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढप्रमृजे सुहृच्छुच त्वयि संस्थिते गदया शीर्ष न्यस्मद्भुजाच्युतया जेततुभ्यं बलिं हरन्तु शयोजे च देवा स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूला स तु तुद्यमानो हृदिक्तु तोमरे दंष्ट्राग्रगं गामुपलक्ष्य भीतं तोदं वृषनिरगाददम्बुमध्यात् ग्राहा हत सकरेणुर्जथेभ तं निःसरन्तं सलिलादनुद्रुत हिरण्यकोशद्विदरं विरदं यथा झस करालदंष्ट्रो सनिनिस्वनोब्रवीत् गतिह्रियं किं तु सतं विगर्हितं स गामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यामदधात् स्वसत्त्वम् अभीष्टुतो विश्वसृजं प्रसूने रापूज्यमाणो विबुधै पश्यतोरेः परानुसक्तं तपनीयोपकल्पं महागतं काञ्चन चित्रदंशं मर्मण्यभीक्ष्णं प्रदुदन्तदुरुक्ते प्रचण्डमन्युप्रहसंस्तम्भभासे। श्रीभगवानुवाच सत्यं वयो भवनगोचरं मृगा जुष्माद्विधान् मृगये ग्रामसिंहन् न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विक्थनं तव गृह्णन्त्यभद्र एते वयं न्यासहरारसौकसं गतौ ह्रियो गदया द्रावितास्ते तिष्ठामहेतापि कथञ्चिदाजौ स्थेयं क्व जामो बलिनोत्पाद्य वैरं त्वं पद्रथानं किल यूथपाधिपो घटस्वनो स्वस्तय आस्वनूह संस्थाप्य चास्मन् प्रमृजाश्रुशुकानं जस्वं प्रतिज्ञं नातिर्पिपर्त्य सद्भ्य। मैत्रेय उवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्चरुषाभृशम् आजहारे लुण्बणं क्रोधं क्रीड्यमानो हिराडिव स्वजन्नमर्षित श्वासान् मुन्य प्रचलितेन्द्रिय आसद्य तरसा दैत्य गदयाभ्यहरद्धरिं भगवंस्तु गदावेगं विसृष्टं रिपुणोरसि अवञ्चयतिरश्चेन जोगारूढ इवान्तकं पुनर्गतं स्वमादाय भ्रामयन्तमभीष्णस अभ्यधावद्धरी क्रुद्ध संसार संरम्भादष्ट तच्छदं ततश्च गदया रातिं दक्षिणस्यं भ्रुवि प्रभो आजग्ने सततं सौम्या गदया कोविदोहनात् एवं गदाभ्यं गुरुभिभ्यं हर्जख्यो हरिरेव च जिगीषया सुसम्रब्धा वन्यन्यमभिजघ्नतु तय स्पृशोऽधिस्ता
स्तग्मगदा हताङ्गयो क्षतास्रवघ्राण विवृद्धमन्यः विचित्रमार्गांश्चरतो तोर्जिगीषया व्यभादलायामिव शुष्मिणोर्मृधा दैत्यस्य जज्ञावयवस्य माया गृहीत्वबाराहतनोर्महात्मना कौरव्यमह्यं द्विशतो विमर्दनं दिग्दिक्षुरागा दृशिभिवृतस्वराट् आसन्न सौण्डीरमपेतसद्वसं कृतप्रतीकारमहार्य विक्रमं विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रणीर्जगाद नारायणमादिसूकरम् ब्रह्मोवाच एष ते देवदेवानामङ्घ्रिमूलमुपेयुषं विप्राणं सौरभेयीनं भूतनामप्यनागसम् आगस्पृद्भय दुष्कृद स्मद्राद्धवरसुर अन्वेषन्न प्रतिरथ लोका नटति कण्टक मैनं मायाविनं दृप्तं निरङ्कुशमसत्तमम् आक्रीडबालवद्देव यथा शीर्पि समुत्थितं न जावदेश वर्धेत स्वम्बेलं प्राप्य दारुण स्वं देवमायमास्ताय तावज्जह्यघमच्युत एषा घोरतमा सन्ध्या लोकछम्बट्करि प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन् सुराणं जयमावह अधुनैषोभिजिन्नाम जोगमौहर्तिकोऽध्यगात् शिवाय नस्त्वं सुहृदा मासो निस्तरदुस्तरं दिष्ट्या त्वं विहितं मृत्यो मयमासादितः स्वयं विक्रमेणं मृधे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याख्यपदे अष्टादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथैकोनविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच अवधर्ज्य विरिञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वच प्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपाङ्गेन स्वगृहीत् ततः सपत्नं मुखतश्चरन्तमकुतो भयं जोघानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षज सहता तेन गदया विहता भगवत्करात् विघूर्णिता पदत्रेजे तदद्भुतमिवाभवत् सतदा लब्धतीर्थोऽपि नवबाधे निरायुधं मानयन् स मृधे धर्मं विश्वक्सेनं प्रकोपयन् गदायामपविद्धायं हाहाकारे विनिर्गते मानयामास तद्धर्मं सुनाभं च स्मरद्विभु तं व्यग्रचक्रं दितिपुत्रधमेन स्वर्पार्षदमुख्येन विसज्जमानं चित्रावाचो तद्विदं खेचराणं तस्तत्रास्माशंस्वस्ति ते मुञ्जहीति शतं निशम्यात्तरथङ्गमग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलासलोचनं विलोक्य चामर्षपरिप्लुतेन्द्रियो रुषा स्वदन्त क्षमादश्वसन् करालदंष्ट्रचक्षुर्भ्यं सञ्चाक्षाणो दहन्निव अभिप्लुत्य स्वगदया हतोऽसित्याहनद्धरिं पदासभ्येन तं साधो भगवान् यज्ञसूकरः लीलयामि शतशत्र प्राहरद्वातरं हशम् आह चायुधा माधस्व घटस्व तं जिगीषसि इत्युक्तः स तदा भूय स्थाडयन् व्यनदन् वृषं तां स आपततिं वीक्ष्य भगवान् समवस्थितः जग्राहलीलया प्राप्ता गरुत्मानिवपन्नगिं सौपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुर नैच्छद्गदां दीयमानं हरिणा विगतप्रभो जग्राह त्रिशिखं शूलं ज्वलज्वलनलोलुपं जज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरन् यथा तदोजसा दैत्यमहाभटार्पितं चकाशदन्तख उदीर्णदीधिति चक्रेण चिच्छेदनिशातनेमिना हरिर्जथा तर्क्ष्यपतत्रमुज्झितं वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरे प्रत्येत्यविस्तीर्णमुरो विभूतिमत् प्रवृद्धरोषसकुट कठोरमुष्टिना नदन् प्रहृत्यान्तरधीयतासुर तेनेत्थमाहत्तख्यत्त भगवान् आदिशूकर नाकम्पतामनन् क्वापि स्रजाहत इव द्विप अथोरुधासृजन्मायं जोगमाये स्वरे हरौ जाङ्विलोक्य प्रजास्तत्र मेनिरेस्योपसंयमं
प्रबभुर्वायवश्चण्डा स्तमपां शवमैरयन् दिग्भ्यो निपेतु रुग्राबाण क्षेपणैः प्रहिता इव दौर्नष्टभगणार्भ्रोर्घे सविद्युत्स्तनयित्नुभिः वर्षद्भिः पूयके साश्रु विण्मुत्रास्तिनि च सकृत् गिरया प्रत्यदुष्यन्त नानायुधामुचो नघ दिग्बाससो जातु धन्य सुलिन्य मुक्तमूर्धजः बहुभिर्जक्षरोक्षोभिः पत्य स्वरथकुञ्जरैः आततायिभिरुष्टा हिंस्रा वाचोऽतीवैशसा प्रादुष्कृतानं मायाना मसूरीणं विनाशय सुदर्शनास्त्रं भगवान् प्राजुङ्क्तदैतं त्रपात् तदादिते समभवत् सहसा हृदि वेपथो स्मरन्त्या भर्तुरावेशं स्तनाच्चाश्रुप्रशुश्रुवे विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रजकेशवं रुषोपगूहमानो मुं ददृशेऽवस्थितं बहिः तं मुष्टे भिर्विनिर्घ्नन्तं वज्रसारैरधक्षज करेण कर्णमूलेऽहं तथा त्वष्ट्रं वरुत्पतिः स आहत विश्वजिताह्यवज्ञया परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचन विशीर्णबाहुश्री शिरोरुहोपतत् यथा नगेन्द्र लुलितो नभस्वता हितौ शयानं तव कुण्ठवर्चसं करालदंष्ट्रं परितष्टदक्षयम् अजादयो वीक्ष सशंसुरागता अहो इमां को नु लभेत संस्थितिं जं योगिन योगसमाधिनारः ध्यायन्ते लिङ्गादशतो मुमुक्षया तस्यै सदित्यैरुषभपदाहत मुखं प्रपश्यन् स्तनुमुत्ससर्जः एतौ तौ पार्षदावस्य शापज्जाता वसद्गतिं पुनः कतिपये स्थानं प्रतीत्स्येते हजन्मभिः देवाऊचो नमो नमस्तेऽखिलजज्ञतन्तवे स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुद स्वत्पादभक्त्या वयमीश निद्रुता मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षमसह्य विक्रमं ससाधयित्वा हरिदादिसूकर जगामलोकसखण्डितोत्सवं समीडिता पुष्करविष्टरादिभिः मया यथानुक्तमवादिते हरे कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितं यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमो महामृधे क्रीडनपन्निराकृता सुतोवाच इति कौसारवाख्यातामाश्रित्य भगवत्कथां यत्ख्यत्तानन्दं परं लोभिलेभे महाभागवतद्विज अन्यैषां पुण्यश्लोकानामुद्दामजससां सतम् उपसृत्य भवेन्मोद श्रीवत्सङ्कस्य किं पुनः योगजेन्द्रं झसग्रस्तं ध्यायन्तं चरणम्बुजं क्रोशन्तीनं करेणूनं कृच्छ्रतो मोचयद्रुतं तं सुखाराध्यं रोजुभिरनन्यशरणैर्नुभैर्कृतज्ञा को न सेवेत दुराराध्यमसाधुभिः यो वै हिरण्याक्षवधं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मना शृणोति गायत्त नुमोदतेञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजा एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषं प्राणेन्द्रियाणां जुदिशौर्यवर्धनं नारायणोऽनन्ते गतिरङ्गा शृण्वताम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधनामो कोनविंशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रं देशकालारवस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रं नाम संकीर्तनं तव यस्य स्मृता च नामुक्ता तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतं जाति सत्य वन्दे तमच्युतं। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णुस्मरणात् सकलं परिपूर्णमस्तु। ओम शांति शांति शांति।